Warm Rotaract greetings to each and everyone present over here. I am Rotaractor Sohali Sudesh Nagvekar, host of the event. Welcome you all. It is said that self belief and hard work will always earn you success. And I'm pretty sure that everybody is excited and enthusiastic for the event and awaiting to perform and showcase their talent on the stage. Talking about the event Summer Fest, it is the celebration of youthfulness and we relate summer and youth with vibrancy and free spirit. I request President of Rotary Club of Mapsa, Rotaractor Ame Varerkar, to address the gathering. Hello, a very good afternoon to everyone, my fellow Rotaractors. Today's guests are Parent Rotary President Rotarian Siddesh, as well as event coordinator, my secretary, our Rotaractors, and my fellow friends from all the shining colleges from Goa. I think it's going to be a tough fight, won't take much time because I know for such functions, formal functions are a bit boring for everyone. I've been a part of it. But I'd just like to say that it was our dream to make a collegiate event happen, to start it from this year, and we'll make sure that it grows bigger and better every year. So I think that we have got good quality participation from the colleges and hoping to see a wonderful event in the next 2 days. Thank you. Thank you, Rotaractor Ame. एक पंटी भितर पेट्टा ती जागय घेऊन आयला वांगडा जितू वाट सरता सरती गय घेऊन आयला वांगडा जितू वाट सरता सरती गय. Lighting of lamp signifies purity, goodness, good luck and power. So I request the dignitaries to spread the positivity by lighting the traditional lamp. गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. Thank you so much. So today we have the most dynamic personality among us. He is the president of Rotary Club of Mapsa and also the president of Aastha's Anand Niketan School. He is none other than Rotarian Siddesh Kotkar sir. Sir, I request you to enlighten us with your inspiring words. President of Rotary Club of Mapsa Ame, Secretary, coordinators of the event. I can see many Rotaractors over here and students from various colleges from Goa, as President had said. Summer Fest is one of the events which the students look forward for from various colleges. As President has rightly said, the introduction function is a bit boring, so I won't take much time. But still, they have given me this opportunity to say something good about the club, to say something good about the President himself also. So within a couple of minutes, I'll just wrap up. 25 years back, I
as a president of the Rotary Club of Mapsa, which are the parent club of the Rotaract Club. So 25 years ago, we gave birth to this dynamic club, which gave lots of Rotary members, which gives DRRs after year. Like, I don't know whether this crowd is aware of what DRR is. That is the district leader of this particular district, of the Rotaract clubs. So they gave us 5 DRRs. On the community part, on the events part, they are leading the district with lots of community service, with lots of projects, with lots of activities. Summerfest is a very exciting, very colorful event of the club, which is there for the last, this is the first time, yeah. So the name he has given summer, even though it's raining outside, even though we have dark skies outside for the last 2 days, but the name was tagged because since it is held in the month of March, they gave the name Summerfest. So mostly no one is in the summer wear today. Most of them college guys I can see in very formal attire, or I could say a casual attire, dressed for the event. Without taking much time, a very innovative ideas by Rotaract Club of Mapsa. I'd like to congratulate the President Ame for taking forward this idea of Summerfest and involving various colleges from in and around Goa. Mind you, it's a big task to arrange such an event which goes for 2 days, and that too in a competitive manner, because they need to judge your performances, your talents, etc., etc. So all the best to the students from various colleges, and all the best to the team, including the coordinators, and congratulations, Ame, once again. Thank you so much, sir. I now request President Rotaractor Ame to present the token of love to our chief guest, Rotarian Siddesh Kotkar, sir. Sir, I request you to declare the Summerfest 2022 open. I declare the Summerfest 2022 open. Thank you. I request Rotaractor Gayatri Joshi, the coordinator of today's event, to kindly brief us about the event. A very good afternoon to everyone. Respected President of Rotary Club of Mapsa, President of Rotaract Club of Mapsa, Secretary, and my co-coordinator, and all of you college students and Rotaractors. I hope you are all very excited for the events to come. I know we've started at 12, but I assure you that, and there will be many singing events, so there'll be duet singing, and I'm very excited about Battle of Bands. So I hope every one of y'all give a very tough fight. At the end, we have really good prizes, cash prizes. So 30,000 for the winner and 20,000 for the runners-up college. So I hope you all are eager to earn that prize. Can I hear a big round of applause for that? Yes, give your best and all the best. Thank you. I now request our club secretary, Rotaractor Advait Shirodkar, to propose the vote of thanks. Greetings to everyone present over here. A very good afternoon. So as the dignitaries mentioned that the inaugural function is the boring part of the event or something. So I'm here to put an end to the boring part. And alongside, I'll be pouring out some words of gratitude. So first of all, I would like to thank in a collective way. Then I would like to firstly thank our chief guest, President of Rotary Club of Mapsa, Rotarian Siddesh Kotkar sir, for being present. President, coordinators, our MOC,
all our sponsors, media partners, connectivity partners, and also our photography partner, wedding crafters, and especially to all the participating colleges and the participants for their presence and this enthusiastic feeling within them to participate, compete, and to enhance what they are. Uh, Summerfest 2022 is a small effort from our side to bring a platform for the students of colleges from Goa to develop themselves and evolve their skills. Thank you, and thank you for being here. Thank you so much. Requesting all the dignitaries to take their seats in the audience. अशें दिसता की तुमी सगळीं कितली एक्सायटेड आसा स्टेजीर वयर येवन परफॉर्म करपाक. But let me tell you one thing, Summer Fest is not only about competition, it is also about fun, excitement, enjoyment, and enthusiasm. So, are you guys excited for Summer Fest 2022? Are you guys excited for Summer Fest 2022? Well then, let us start with our event and let's have a memorable Summerfest 2022. So now I hand over the mic to Rotractor Anishka Raut, who is the coordinator of Poetry Recitation Competition. Before we start poetry recitation, the link to the live stream of this event is on our Instagram page and Facebook page, which is Rotract Mapsa. Please share it with your friends and also call them to cheer for your participants who are on stage. Please. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Anishka Raut and I am the coordinator for today's poetry recitation. Before we start, let me introduce to you the judge for today's competition, Mr. Paresh Hanuman Naik. He is from Mandrem, Goa. He is a poet, lyricist, and author. He published 2 poetry books. One is Mukhauta Atsa Me and Prajakta. He won many prizes in poetry recitation contest in Goa and Maharashtra.
written songs for albums and YouTubers, compared several musical shows with artists from Goa, Maharashtra, Karnataka, and other states, written and staged two plays, Anandache Dohi and Diwali, written short films such as Bus Stop and Kaku. I welcome you, sir. So before we proceed further, let me read out the rules of this competition. One participant from each college. Language can be Hindi or English. Maximum time is 3 minutes and first 30 seconds should be introduction. No restrictions on poem used. It can be self-written or credits to be given to the respective poet. No explicit language. Decision of the judges should be final and binding. Participants will be judged on the following criteria, that is feelings, vocabulary, voice, and overall performance. So let us start with the first team of poetry recitation. The first team for today's competition is Meteors. Team Meteors. A very pleasant afternoon to everyone. I'm Rashi Sargaonkar and I'm here to read an original poem and a poem by Nikita Gill. Dearest darling, how long will you fight for? How long will you justify your existence? I can't watch as you watch your reflection pity you. The wind rushes in the night and drowns out the sound of your cries as you wish for your mother's love and crave your father's affection. You walk to the apartment you call home and live with people you don't know. You contemplate your tomorrow on the rooftops and drink through the night. You sleep in someone else's bed and you pinch your already sore skin. You call your friends till the last ring and you laugh with all your teeth, just in hopes to feel again, just in hopes to feel again. That was an original poem, and this is The Art of Emptiness by Nikita Gill. There is an art in the emptiness of all natural things. Ask every creature that builds hollow spaces as a shelter from the weather. They fill these spaces with the fullness of their bodies, and for them, this is enough. Humans go against their own nature and conflate empty with the dull and with lonely. Fill up spaces that do not need feeling, anything to help us escape boredom and its tragedy.
And this is why we fill our children's heads with stories to combat the mundanity. And this is why the little girls end up learning emptiness the hard way, that the stories were castles in the air. How true loves and princes are really just confused little boys who haven't yet learned how to love. That sometimes you fall in love with a princess instead of a prince, and that's okay too. Maybe this is why the stories need to evolve from air into fire instead. From airborne fairy tales, we can read them fairy tales when it's time for bed. Thank you. Thank you so much, Meteors. The second team for today is Jungle Kings. Hello. माँ की ममता दर्शाने वाले हर एक कविता लिखते हैं, पर माँ का प्यार, तकलीफ़ और ख्याल रखने की तरफ बहुत कम लोग लिखते हैं। मैं श्वेता चंद्रसेन सावयकर टीम जंगल किंग से सादर करती हूँ मेरी लिखी कविता माँ की बोली। घर में खुशियाँ आई हैं, घर में खुशियाँ आई हैं, अरे मैंने माँ बनने की खुशखबरी लाई है। ये छोटी सी नन्ही सी जान इस दुनिया में आने वाली है। किस किस को बताऊँ कि मेरी एक नई दुनिया बसने वाली है। हर एक महीने मुझे दर्द है सहना, पर वो दर्द नहीं, मेरे बच्चे की आहट है। हर पल गुज़रता, हर दिन गुज़रता, बस राह तकती रहूँ तेरे आने की मैं। आखिर वो दिन आया जब मेरी जान का टुकड़ा मेरे गले लगने वाला है। वो अकेला एक पल होगा ज़िंदगी में जब तुम रोओगे और मैं मुस्कुराऊंगी। मेरे शरीर साथ नहीं देता, पर मेरी रूह बोल रही है, बस थोड़ा और दर्द और फिर तेरी जान हाथ थामने वाली है। अरे क्या कहूँ क्या ना कहूँ, खुशी से मुझे बताया मुबारक हो आपको लड़की हुई है। मेरी नन्ही सी परी का मुंह देख डबडबाती सी आँखों में हंसी खिलाई है, मेरी परी आई है। सब लोग कहते हैं पराए घर का धन है मेरी जान, पर हैं तो वो मेरी मुस्कान। दूंगी मैं हर एक को खुशियाँ और मुख पे उभरने का, जो ना मुझे मिला जीने को। कहे लोग कहते थोड़ा बांध के रखो उसे, है तो मेरी परी, मैं कहती हूँ उड़ दो। छोटी सी कली बढ़ने लगी जब, संसार का घिनौनापन देख घबराया सा मन। ज़रा सा क्या बोला, थोड़ा संभल के कदम ले। बेटी बोली तू तो पराए जैसे बोलने लगी अब। क्या करूँ मैं, माँ का दर्द तो समझो। दुनिया है बुरी और तू है अनमोल। ना छीनूंगी तेरे सपने, देखना है मुझे उड़ता। तेरी माँ तो सिर्फ खड़ी है तूफान में बनके तेरी कश्ती की तरह, है तो तेरी सिर्फ माँ। थैंक यू। Thank you so much for such a lovely poem. The third team for today is Pina Colada. My name is Pratik Kharate and I am 19-year-old. वैसे लिखने की मेरी ख्वाहिश नहीं थी बचपन से, पर हुआ यूँ कि गमों का सिलसिला बढ़ता गया, कारवां बनता गया। कलम हाथों से मेरा उठता गया, स्याही भी घिसती गई, शब्द भी बोल पड़े और आप जैसे लोग वाह वाह भी करते गए, और बस हम लिखते गए, लिखते गए और लिखते गए। शुरू करूँगा दो पंक्तियों के साथ।
कि तेरा इश्क भी पाने मुझे दुनिया से लड़ता है क्या? तेरा इश्क भी पाने मुझे दुनिया से लड़ता है क्या? अरे ना भी हो अगर, इस बात से मेरे इश्क में फ़र्क पड़ता है क्या? और इसी सोच के ऊपर एक कविता लिखी थी, और ये कविता का कुछ इस विषय पे बेस्ड है कि मैं अपनी माशूका जो है उसके रूह से बात कर रहा हूँ। रूह यानी सोल। तो रूह से रूह की बात जो है इस जन्म में हम मिल नहीं सकते, तो शायद कोई ऐसी दुनिया हो जहाँ हम दोनों मिले और वो सारे ख्वाब पूरे करें। तो उस पर एक कविता लिखी थी कि तू सोई होगी जब, पुकार सुन मेरे रूह की उठ जाना यूं। तू सोई होगी जब, पुकार सुन मेरे रूह की उठ जाना यूं, कि काया को तक भनक ना हो तेरी। तू सोई होगी जब, पुकार सुन मेरी उठ जाना यूं, कि काया को भी भनक ना हो तेरी। ले जाना है तुम्हें जहान उस, जहां मिलना शायद मुमकिन हो हमारा। थामे हाथ चलना जहां का दस्तूर हो, थामे हाथ चलना जहां का दस्तूर हो, दस्तूर यानी ट्रेडिशन। थामे हाथ चलना जहां का दस्तूर हो, एक दूजे में खो जाना जहां का तहजीब हो, कल्चर। थामे हाथ चलना जहां का दस्तूर हो, एक दूजे में खो जाना जहां का तहजीब हो। सितारे भी जहां मिलते हो हमारे, और सूरज भी उगता जहां बस हमारे लिए हो। मेरी सारी तमन्नाओं का एक पेड़ हो जहां, जिसके नीचे बैठ हम दोनों, पत्ता दर पत्ता पूरी करे ख्वाहिश मेरी। और फल भी गिरा दे बीच में, जो पूरी करे चाहत सारी। बुनियाद जहां बस मैं हूं तेरी, यानी कि जहां की बेसिक नीड बस मैं हूं तेरी। बुनियाद जहां बस मैं हूं तेरी, आ जा चल ना कर अब तू देरी। अरे जिस्म दोनों का रहे पड़ा यही, इश्क तो दो रूह के बीच का मसला है। एक और कविता लिखी थी कोविड के समय में, जब मेरी माशूका यानी लवर होता है, मिलने आई थी, तो वो कुछ चीज़ छोड़ के गई थी मेरे पास। तो वो चीज़ आप लोग गैस करना क्या हो है। मैंने वो ऐसी चीज़ है कभी रोमांटिसाइज ही नहीं हो सकती, तो मैंने उसको रोमांटिसाइज करके लिखा है। ज़रा आपकी तवज्जो चाहूँगा। अपना बस्ता खोल जो मैंने देखा, कल छूट गया कुछ तेरा पास मेरे। अपना बस्ता खोल जो मैंने देखा, कल छूट गया कुछ तेरा पास मेरे। मैं लौटा दूंगा ये सोचना भी मत, क्या करूंगा उसका ये पूछना भी मत। कम वक्त खूबसूरती छुपाता है तुम्हारी, इस वजह से इसे फेंक दूं, या तेरी फिराक, फिराक यानी एब्सेंस, या तेरी फिराक में मुझसे बातें करेगा, इस वजह से इसे रख लूं। आखिर इसने सारी सुनी वो बातें मशरूफ हो की जो हमने, इसने सारी बातें सुनी जो हमने मतलब एंगेज होके की थी। तो आखिर उसने सुनी वो सारी बातें जो मशरूफ हो की हमने, कहीं इसने सारी खामोशा भी तो नहीं ली सुन। वैसे भी कानों का बड़ा सगा है ये, माना उसने सबको बचाए रखा है, पर बटा दिया ध्यान सबका आंखों की ओर तेरी। बाकी चेहरे पर तो जैसे हक है इसका, छोड़ो यार जो वाकिफ हो तेरी खूबसूरती से, लोग गिनती में जितने कम उतने ही अच्छे। और जाते जाते बस दो वाक्य कहते जाऊंगा आपको कि ना झूठ ना सच्चा होता है इश्क, ना गलत ना सच्चा होता है इश्क, बस पूरा या तो अधूरा होता है इश्क। शुक्रिया। Thank you so much, Team Pina Colada. The next team for today's competition is Galaxy Stars. Hi. Okay. Good afternoon to the judge, my fellow contestants, and everyone else present here. I'm Azaz Mullah, and I'll be presenting a poem in front of you on the Day of Independence from the point of view of the daughter of a freedom fighter, and it's self-composed. So,
There's something in the air today. In the way the sunrise is a little more warm and mummy is crying a little less frail. But she's smiling as well on this break of dawn. She says she's happy. How can a crying person be happy and not distraught? She says I'm too young to understand. I know mummy's a freedom fighter, and she says things have and haven't gone as planned. Moving on, we'll have to live in an India that's been halved. But rejoice, she says. At least we'll live in an India that's an independent land. She told me, you will mature in a nation run by our people, and you will grow not as a kid who had to struggle for her freedom. She smiled shakily with a shaky shimmer in her eyes. She once told me she'll keep fighting until the day that she dies. But she promises now that she'll always be there for me. So much for dying. She'll never even have to fight again. Again, I feel there's something in the air today, and the breeze is a little more cool. There's something in the air today. My mummy is smiling with a smile on her face, and I am smiling too. Thank you. Thank you so much, Galaxy Stars. So we are done with all the 4 teams, but we have one more poet amongst us, that is our President Rotractor Amey Varerkar. So I request him to come on the stage and recite one poem for us. Hello, check. Sorry, but I am not prepared. तो चलता मैं. Hello, check. Am I audible? Hello. Okay. So Anishkaन एक surprise दिला आणि उधर सांगितलं म्हाका maybe you might have to do this. So I'll just recite one of my poems in Hindi, but I want everyone to be a part of it. Is that fine? Louder. Even louder. Okay. So it's a Hindi poem titled Galti. Okay, I don't know if any one of your retractors are very used to this, because it's very simple and I keep saying it whenever we are together. Again, I'm saying I just want everyone to be a part of it. Is it fine? Okay. So it's about the mistakes that we do in our lives. We keep on doing mistakes and our life is full of mistakes. And then we learn and then we correct them, right? So it's Galti. मुसीबतों से डरता हूँ, पागलपन में करता हूँ. मुसीबतों से डरता हूँ, पागलपन में करता हूँ. मुश्किलें दूसरों की अपनाकर मैं हर दिन जीकर मरता हूँ. खट्टी मीठी जिंदगी कुछ ऐसे ही जीता हूँ मैं. अक्सर गलती कर देता हूँ मैं. अक्सर गलती कर देता हूँ मैं. नफ़रत की खुशबू फिज़ा में महकती है. प्यार से ही तो ज़िंदगी चमकती है. इसी चमक को हमेशा ढूंढता रहता हूँ मैं. अक्सर गलती कर देता हूँ मैं. अक्सर गलती कर देता हूँ मैं. दोस्तों ने ज़िंदगी का सार बताया. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. दोस्तों ने ज़िंदगी का सार बताया. पीठ पीछे करते हैं कैसे वार बताया. इस पीठ पीछे वार से डरता हूँ मैं. अक्सर गलती कर देता हूँ मैं. अक्सर गलती कर देता हूँ मैं. ज़िंदगी को त्योहार बनाया. ज़िंदगी को त्योहार बनाया. दुश्मनों को यार बनाया. मुरझाए हुए चेहरों से मैंने परिवार बनाया. मेरे कातिलों से भी प्यार करता हूँ मैं. अक्सर गलती कर देता हूँ मैं. हर एक को तंग किया. हर एक को तंग किया. सन्नाटे का भंग किया. सुर्ख गुलाब हाथ लेकर मैंने उसे बेरंग किया. खूबसूरत ज़िंदगी का कचरा बना देता हूँ मैं. अक्सर गलती कर देता हूँ मैं. अक्सर गलती कर देता हूँ मैं. और दर्द की वो बारिश थी. दर्द की वो बारिश थी. एक नई ख्वाहिश थी. 2 लफ्ज़ सुन लेना मेरे, इतनी ही गुजारिश थी. उनके ना कहने पर भी गुजारिश करता रहता हूँ मैं. अक्सर गलती कर देता हूँ मैं. अक्सर गलती कर देता हूँ मैं. द लास्ट स्टैंजा. उनका भी कोई प्यार है.
उनका भी कोई प्यार है, उन दोनों की नौका पार है, दुनिया के कोने में मुझे किसी का इंतज़ार है, इसी इंतज़ार में मेरा वक्त बिताता हूँ मैं, अक्सर गलती कर देता हूँ मैं, अक्सर गलती कर देता हूँ मैं. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Ame, for such a lovely performance. Now, I have an announcement to make. All the participants of umbrella painting are requested to come stand next to the umbrellas. All the participants of umbrella painting are requested to come near the stage. Thank you. Good afternoon, everyone. Rotary Club of Mapsa organized this summer fest, so it's an honor to be here, and it's pleasure to listen wonderful poets here, including my friend Amey. So it's lovely to be here, and it's an honor to be on the seat, meaning that's the always hot seat. But I did my best, and finally I would like to say it's all about poetry is all about feelings and nothing else. Because I would say कोंकणी उलयता माझी इंग्लीश पाड पडल्या. So when we say poetry, basically when we write or what we write is all about pain. कि अगर कहीं पे दर्द है वहीं पे कविता है. अगर उसमें दर्द नहीं है, अगर उसमें फीलिंग नहीं है, अगर उसमें भावना नहीं है, तो वो कविता हो नहीं सकती है. सो आई डिड माई बेस्ट टू जज द फीलिंग्स ऑफ अ पोएट, द फीलिंग्स ऑफ द पर्सन हु वॉज रिसाइटिंग ओवर हियर. सो दैट्स इट, एंड अगेन thank you very much. And what about feelings? So can I say a few words of my poetry? What do I write? So because Summerfest, I can see all Jawan people here. So it's the fest of Javani. So I would dedicate this Javani to some other Javani. एक मराठी कविता आहे आणि एका सैनिकासाठी लिहिलेली, आणि त्याची अगोदर पार्श्वभूमी सांगतो की व्हॉट पोएट्री इज ऑल अबाउट. मी म्हणालो की भावना, ऑल अबाउट दर्द, ती वेदना असते. त्या वेदनेची ही कविता आहे. की एकदा मला एका माझ्या मित्राने फोन केला आणि तो म्हणला की एक सैनिकावरती गाणं लिहून हवं आहे आणि ज्याचा कार्यक्रम आपल्याला साखळीच्या रवींद्र भवनमध्ये करायचा आहे. तर अगदी सो व्हॉट गॉड हॅज प्लॅन्स इन हिज माइंड वी डोंट नो. एका माझ्या दुसऱ्या मित्राने मला फोन केला अँड ही वॉज ऑन चायना बॉर्डर अँड ही इज इन इंडियन आर्मी. सो ही वॉज ऑन चायना बॉर्डर. मी म्हटलं की संदीप मित्रा कसा आहेस? तो म्हणा मस्त आहे, मजेत आहे. म्हटलं काय करतो आहेस? तर काय नाही, 25 किलोची एक बॅग माझ्या पाठीवर आहे. श्रावणातले दिवस होते, मला छत्र्या बघून आठवण झाली की 25 किलोची बॅग माझ्या पाठीवर आहे. हातामध्ये AK-47 आहे जी अराऊंड एक 8-10 किलो तरी असेल. मी गुडघाभर बर्फामध्ये उभा आहे, ज्याने 4 लेअर कपड्याचे चढवून तो त्या बर्फामध्ये गुडघाभर बर्फामध्ये उभा आहे आणि तो सांगतोय की मी एकदम मस्त आहे, मजेत आहे. सो दिस इज वॉट टच्ड मी. आणि त्यावर केलेली ही कविता आहे की श्रावणामध्ये त्यांचा श्रावण त्या ठिकाणी कसा असेल याची कविता आहे. आणि केवळ एक भावनिक दृष्टिकोनातून त्याच्याकडे बघा की हा श्रावण झरतो, हा श्रावण झरतो अन मी झुरतो चिंब चिंब होताना. मला सगळं आठवलं, माझ्या घरातला श्रावण, माझ्या आजूबाजूचा श्रावण, की हा श्रावण झरतो अन मी झुरतो चिंब चिंब होताना. या मातीचा गंध उराशी दूर दूर जाताना, या मातीचा गंध उराशी दूर दूर जाताना. आणि श्रावणामध्ये असते राखी पौर्णिमा.
तर तो सैनिक तिकडे काय म्हणत असेल की असेल माझी बहीण उभी बघ राखी घेऊन हाती, असेल माझी बहीण उभी बघ राखी घेऊन हाती, तिला काय ठाऊक इथे मी कफन बांधले माती, तिला काय ठाऊक इथे मी कफन बांधले माती, गर्व वाटतो रक्षणार्थ जीव ओवाळून देताना. आपण बहिणीच्या ताटात ओवाळणी टाकतो राखी बांधल्यानंतर, की गर्व वाटतो रक्षणार्थ जीव ओवाळून देताना, या मातीचा गंध उराशी दूर दूर जाताना. आणि सीमेवर लढताना रे मज आठवते दहीहंडी. आपल्या श्रावणातला उत्सव आहे दहीहंडी, की सीमेवर लढताना रे मज आठवते दहीहंडी, गोपाळांच्या नाहीत रे शहीदांच्या पडती झुंडी, कृष्णासम भासतो मला मी रक्ताने भिजताना, या मातीचा गंध उराशी दूर दूर जाताना. आणि शेवटी आपल्या प्रत्येक मंदिरामध्ये भजनं होत असतात श्रावण महिन्यामध्ये, की भजन चालते रोज इथे बघ सकाळ सायंकाळी, भजन चालते रोज इथे बघ सकाळ सायंकाळी, मृदंग झडतो तोफांचा गोळ्यांची पडते टाळी, मृदंग झडतो तोफांचा गोळ्यांची पडते टाळी, आणि या देहाचा अभंग होतो, या देहाचा अभंग होतो तिरंग्यात निजताना, या मातीचा गंध उराशी दूर दूर जाताना, या मातीचा गंध उराशी दूर दूर जाताना. आपल्यातली ही जवानी अशीच टिकवून ठेवा, कारण तिथे कोणीतरी जवान आपल्यासाठी सज्ज आहेत याची आठवण सदैव आपल्या मनामध्ये राहू द्यात. जय हिंद. Thank you so much, sir, for your lovely words. Now I request President Retractor Ame Varerkar to give a token of love to our judge.
Golsangi. He's from Asagaon, Bardes, Goa. He has completed his Bachelor of Fine Art at Goa College of Art, worked as an art teacher at GPMS Thivim for 4 years. He's served presently director at Eventent Productions, Art and Entertainment Company, professional photographer. He's serving my service as a production designer and art director for Bollywood, Marathi film industry, television, commercial ads like Honda Car, Toyota, Asian Paints, Aqualite, food, footwears, Fevicol, Pure Soap, lifestyle, holics, and music albums like Chal Bombay, Sajna Ve, and more. He's also a professional caricature artist, painter, and muralist. A big round of applause for our judge for umbrella painting today, Mr. Parshuram Golsangi. I request Nandan to please present our judge with a token of gratitude. I request our President, Amey Varerkar, to please present our judge with a token of gratitude. The judging criteria for the umbrella painting were relevance to the theme, creativity, element or principle of art, and presentation. Thank you.